तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट आशा करुँच आपण समस्त भल थे कि आज आम डिस्कसन करवा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 3 जहाँकि आम प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कसन करते पार्ट 1 पार्ट 2 एवं टेस्ट सीरीज 3 तो आम टेस्ट सीरीज 2 जाए जाइए तो आज आम डिस्कस करवा टेस्ट सीरीज 3 ठीक अच्छे। तो मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट फॉर ओटी पॉलिसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट जोटा कि आम रिपीटेड एमसीक्यू फ्रिक्वेंटली आसछि एग्जाम रे। और जदि आम चैनल आपण मैंने नुआ ताहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल रखते जहाँफल वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम पाइपर। तो बहुत छुआ आपण मैंने वीडियो देखुं लाइक करते और सब्सक्राइब करते जहाँफल सब नोटिफिकेशन प्रथम आपण मैंने पाइपर। तो आम रथ यात्रा टाइम रे बहुत ही हेल्पफुल देवी बहुत ही नुआ पीडीएफ गुड़ा मुझे पठेबी बहुत ही सरप्राइज रहा स्टडी रिलेटेड ठीक अच्छे। तो केमी इजिली क्रैक करेंगे से विषय में स्ट्राटेजी आम कथा। तो मु गोटे क्वेश्चन पचारि 51 रे देखंतु जोटा कि बहुत छुआ सब राइट करेक्ट आंसर देछंती। तो ये कहले कौन कहला ए पेशेंट ऑन वारफेरिंग थेरापी फॉर आर्टेरियल फिब्रिलेशन पेशेंट विथ ब्लैक स्टूल व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो ये कौन नर्सेस एक्शन रहिबा कौन कौन रहिला ना डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग इंक्रीज द वारफेरिन डोज चेक INR एंड नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली एनकरेज एज हाई प्रोटीन डाइट। तो जिते बड़े भी कौन जेहेतु आम वारफेरिन आर्टेरियल फिब्रिलेशन देखा जहाँफल प्रेजेंट कौन ब्लैक स्कूल स्टूल आम देखागला। तो नर्स प्रायोरिटी आज नर्स आम कौन करवा आम इमिडिएट कौन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जोटा कि आमर INR चेक करवा एवं आमर जो फिजिशियन को इमिडिएट आमर कंसर्न करवा। तो ऑप्शन कौन सी ही आमर करेक्ट आंसर। देन आम जा क्वेश्चन नंबर 52 ए चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक अच्छे पेशेंट कौन गोटे नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट एडमिट होती। तो विथ कौन कंप्लेन नहीं नाम जनरलाइज एडिमा और फ्रॉदी यूरिन। तो आज ए नर्स फास्ट आम कौन डायग्नोसिस करवा ना रिस्क फॉर इन्फेक्शन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सचेंज इम्पेयर स्किन इंटरग्रिटी और डिस्टर्ब बॉडी इमेज कौन हो ना जेहेतु एडिमा देखा जाउची एवं फ्रॉदी यूरिन देखा कौ केस देखा जाए जिते बेले आमर कौन फ्लूइड वॉल्यूम टा एक्सेस हो जाए ठीक अच्छे। जदि फ्लूइड वॉल्यूम टा एक्सेस इंक्रीज होताहले कौन आमर नेफ्रोटिक सिंड्रोम टा देखा जाए। तो कौन ऑप्शन बी ही आमर राइट आंसर। Then 53 after thyroid surgery गोटे पेशेंट है आफ्टर थायराइड सर्जरी द नर्स नोटिस द पेशेंट हैज हॉर्सनेस एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। तो कौन साइन सिम्पटम द हॉर्सनेस अच्छी डिफिकल्टी स्पीकिंग अच्छी। देन व्हाट इज द नर्स सस्पेक्ट कौन सस्पेक्ट करवा हाइपोकालिमिया डैमेज टू रिकरेंट लारिंजियल नर्व लारिंजियल एडिमा और ट्रैकिया कोलैप्स। देखो जिते बेले ट्रैकोस्टोमी हुए ठीक जेहेतु सॉरी आमर थायराइड सर्जरी हुए थायराइड रे आमर मेनली आमर को नर्व लगी थाए ना आमर लारिंजियल नर्व। तो सेटा आमर कौन डैमेज होबार चांस आमर बहुत परिमाण रे थाए। तो से जदि आमर कौन डैमेज होगा ताहले कौन आमर डिफिकल्टी स्पीकिंग रे प्रॉब्लम होगा हॉर्सनेस देखा जीवो। तो से केस रे कौन कौन हो डैमेज टू द रिकरेंट लारिंजियल नर्व ऑप्शन बी ही आमर राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 54 ए पेशेंट विथ डायबिटिक गोटे पेशेंट डायबिटीज कंप्लेन कौन अच्छी ना बर्निंग सेंसेशन ऑन द फीट एंड डिक्रीज द सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन देखा जाउची कोठी आमर पादरे एवं सेंसेशन किछि नाही। तो दिस कंडीशन
कौन सस्पेक्ट करे पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस हाइपोग्लाइसेमिया ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन नामर पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जदि पेरिफेरल नेफ्रोपैथी थिबो ताहले कौन साइन सिम्पटम देखिबो ना मन रखिबे सब बेले कि आमर कौन फिट गुड़ा कौन स्वेलिंग हो बर्निंग सेंसेशन हेबो ठीक अच्छे ये सब है साइन सिम्पटम आमर कहार नामर डायबिटीज तो ऑप्शन ए ही आमर करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 55 एठी कने कोन कहूची a nurse find a patient having generalized tonic clonic seizure tonic और clonic seizure देखा जायछि then what is the nurse do first ताले फास्ट हमें कोन करबा insert the tongue blade insert करबा ना place the patient in supine position रे देबा the turn the patient side and protect the airway and restrain the patient movement कोन करबा सब जते बेले भी हम कोन सीजर हो जे हम कोन साइड लाइन पोजीशन देबा विथ हम कोन सब बेले देखिबा कोन एयरवे को तो कोन हिबा से ऑप्शन सी हिबा हमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रेग्नेंट वुमेन विथ प्रेजेंट कोन देखा होची तार होची हाइपरटेंशन प्रोटीनूरिया एंड जनरलाइज एडिमा ताहले हम को कॉम्प्लिकेशन रो सस्पेक्ट करबा यह कहार साइन सिम्पटम प्लासेंटा प्रीविया प्रीक्लाम्सिया और एब्रेसियो प्लासेंटा कहार नामर प्रीक्लाम्सिया कोन देखा जे नामर हाइपरटेंशन देखा जबा प्रोटीनूरिया प्रेजेंट थबा विथ एडिमा ताहले कोन प्रीक्लाम्सिया तो ऑप्शन सी हिबा हमर राइट आंसर then come to next question 57 a nurse noticed that a patient on IV phenytoin तो patient कोन नछि नामर phenytoin अछि डेवलप कोन slurred speech and ataxia देखा जाउछि ताहले मोस्ट प्रोबेबली कॉज कोन हिथिबो नामर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस phenytoin toxicity hypoglycemia or stroke and the correct answer is हमर कोन phenytoin toxicity जदि phenytoin toxicity हेबो ताहले कोन देखा जिवो slurred speech एवं ataxia हमर मेनली कोन साइन सिम्पटम देखा जाय थाय then next question 58 a patient is receiving chemotherapy गोटे patient कोन chemotherapy रिसीव करूची then कहिला the nurse observes a low WBC count कोन तार WBC count हमरो डिक्रीज अछि WBC count डिक्रीज then आज नर्सिंग इंटरवेंशन कोन रहिबो ताको हम कहबा एनकरेज हाई फाइबर डाइट खाइबा पई ना लिमिट फ्लूइड नेबा पई ना इम्प्लांट स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन और प्रोवाइड लाक्सेटिव ओ केस रे देखा जाय जते बिले हमर कोन जदि WBC काउंट हमरो डिक्रीज हेबो ऑन गुटे केमोथेरापी पेशेंट रे ठीक अछि ताहले हमें कोन स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन में यूज कर तो कोन हबो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर then 59 a patient receiving IV potassium complaint of burning at the site गोटे पेशेंट कोन ना हमरो IV पोटासियम नोची हैला पोटासियम इंजेक्शन नेला जो भेरे नोची सेठी कोन ताको बर्निंग सेंसेशन देखाला ताहले हमें कोन करबा इमीडिएट ना ए रेगुलर स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली अप्लाई आइस पैक देबा ना कंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर then notify the physician after the complaint तो कोन ना जेते बेले हम कोन किछि कॉम्प्लिकेशन आसी ताहले कोन स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर जिते बेले कौन बर्निंग सेंसेशन में भी फेलाबाइटिस हेबार चांस थाए तो से स्टॉप करने फॉर फर्दर इंजुरी पे 1060 ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन गोटे पेशेंट आम कौन ब्लड ट्रांसफ्यूजन देवार अच्छी ताहले नर्स आम आज ए नर्स आम कौन फास्ट चेक करवा तो पेशेंट ब्लड प्रेशर देखा वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन एंड ब्लड ग्रुप आम देखा ना एसएस द आईपी साइड वन द ब्लड काउंट सब बेले जेकोसी आम कौन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आम करुचे से मोस्ट भी आम कौन पेशेंट आइडेंटिफिकेशन चेक करवा एवं पेशेंट ब्लड ग्रुप मोस्ट फास्ट हमार प्रायोरिटी तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर then 61 a nurse is caring for a patient with chest trauma who is suddenly developed tracheal deviation and absent breath sound on the one side and hypotension then what is the most likely cause एते कोन कहला गुड नर्स केयर कथि गुटे चेस्ट ट्रॉमा पेशेंट को जगह सडनली डेवलप कौन है ट्राकिया डेविएशन देखा गला absent breath sound एवं absent breath sound in one side and the hypotension low BP कौन pulmonary edema tension pneumothorax cardiac tamponade और brachial asthma कौन जदि सडन हमर कौन चेस्ट पेन हबो ट्राकियल डेविएशन देखा ताले को केस ना हमर pulmonary जदि सॉरी pulmonary को हमर टेंशन न्यूमोथोराक्स तो टेंशन न्यूमोथोराक्स रे कोन हुए ना जिते हम ट्यूबुलर पेस रे एयर का ट्रैप हला परे कोन हुए ना गोटे हाई प्रेशर क्रिएट हुए ठीक अछि जो प्रेशर टा हमरो शिफ्ट हो कोन हमरो ट्राकिया टू हमर ऑपोजिट साइड जहाँ फल कौन कोलाप्स लंग्स टा हमर कोलाप्स होता है से कौन कौन एब्सेंट हमर ब्रीदिंग साउंड एब्सेंट रहे एवं जोटा कि हमर ब्लड रिटर्न करता है पुणी हार्ट को जहाँ फल कौन सीवियर हाइपोटेंशन देखा जाए ठीक अच्छे जहाँकि मेनली हमर क्लिनिकल साइन ऑफ टेंशन न्यूमोथोराक्स then 62 during a blood transfusion a patient complains chill fever and back pain what is the nurse immediate action the patient PRBC कि ब्लड दउचे ताहले कोन देखाला फीवर चिल एवं बैक पेन ताहले कोन कंटिन्यू इन्फ्यूजन स्लोली देबा एडमिशन एंटीपायरेटिक देबा स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली और रीचेक ब्लड प्रेशर कोन हबो सो प्लीज स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन कला गुटे सीओपीडी पेशेंट डिस्चार्ज ऑन होम ऑक्सीजन थेरापी रे हम डिस्चार्ज हेची व्हाट इज द टीचिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टू प्रिवेंट फेयर hazard so prevent for fair hazard केमती कारण निया लगबना से हिसाब से हम कोन प्रिकॉशन हम ताको काउंसलिंग करबा टीचिंग करबा तो पेशेंट कोइबा पेशेंट लोक कोन कहबे एडजस्ट द फ्लो रेट द बेस्ड ऑन द कंफर्ट स्टोर द ऑक्सीजन सिलेंडर इन any room avoid smoking near the oxygen incumbent or increase oxygen if breathless तो कौन जेहेतु आम कौन ये गला फेयर hazard कहे से एवॉइड स्मोकिंग नियर द ऑक्सीजन इक्विपमेंट ऑप्शन सी जो स्मोकिंग करछे ताहले कौन निया लागिबार संभावना अछि एठी कहले गला पेशेंट रिसीव करछे कौन टीपीएन नौछि देन फास्ट नर्सिंग प्रायोरिटी कौन ना मॉनिटर डायरिया मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल ग्रीन जैसे टीपीएन काली मु प्रीवियस क्लास रे कहले टीपीएन कौन हाईली आम कौन ग्लूकोज थाए से ग्लूकोज आम इनक्रीज हो जाए मेनली तो से मॉनिटर ग्लूकोज लेवल आम मॉनिटर करवा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ए पेशेंट विथ हेड इंजुरी ठीक है गोटे पेशेंट आसी हेड इंजुरी पेशेंट डेवलप कौन क्लियर फ्लूइड लीकेज फ्रॉम द नोज रु फ्लूइड लीकेज होची देन
द कन्फर्म व्हिच टेस्ट टू आम कन्फर्म कि आम CSF लीक हो ना ब्लड सुगर टेस्ट, कीटोन स्ट्रिप टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट ऑफ द फ्लूइड, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन ना आमर सब कौन कीटोन स्ट्रिप कीटोन कहते आमर ग्लूकोज टेस्ट फॉर द फ्लूइड तो आम कौन कहार CSF फ्लूइड आम कौन ग्लूकोज टेस्ट करवा तो ऑप्शन सी आमर राइट आंसर। Then 66 a child with acute glomerular nephritis present with periorbital edema and hypotension, what is the most important nursing intervention? पहले से केस रे कोन करबा ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस रे मॉनिटर यूरिन आउटपुट, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, एनकरेज फ्लूइड, परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी कोन मॉनिटर यूरिन आउटपुट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस केस रे कोन होइते हमर कोन मेनली किडनीटा इन्फ्लामेशन होता है जहाँ प्रॉपर से कौन करें आमर फिल्टर करें जहाँकि आमर कौन जदि ठीक से फिल्टर करें कौन लीड कर कि आमर यूरिन आउटपुटा कौन प्रॉब्लम डिक्रीज हम। देन 67 a nurse is caring for a patient with liver cirrhosis, गोटे पेशेंट अच्छी liver cirrhosis, then which assessment finding indicate hepatic encephalopathy कौन येलो स्केरा देखा asterexis, increase urine output or low blood pressure and the correct answer is कौन है नंबर asterexis जोटा कि कौन stopping tremor। Then 68 a patient is admitted with the deep vein thrombosis DVT, then which most important nursing action DVT अच्छी ताले कौन nursing intervention रहिबा measure the effective leg, encourage vigorous leg exercise, monitor sign of the pulmonary embolism and apply cold compression कौन monitor the sign of pulmonary embolism option C is the correct answer। Then 69 a nurse is caring for a child with severe diarrhea and dehydration तो कौन डायरिया होची एवं डिहाइड्रेशन ताहले which critical assessment तो हमें कौन असेसमेंट करबा स्किन टर्गर, बाउल साउंड, रेस्पिरेटरी रेट और कैपिलरी रिफिल टाइम कौन ऑप्शन डी कैपिलरी रिफिल टाइम तो जेहेतु डायरिया एवं डिहाइड्रेशन कैपिलरी हमें रिफिल टाइम हमें चेक करबा। Then 70 a patient develop wheezing and shortness of breath immediately after receive antibiotic गोटे पेशेंट एंटीबायोटिक नेला परे कौन ना तार wheezing देखा गला एवं shortness of breath जोटा dyspnea ताहले कौन नर्स आम सस्पेक्ट कौन करबा ना पल्मोनरी एडिमा है एनाफिलेटिक रिएक्शन, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन और निमोनिया कौन ये सब केस होची कहार ना हमर एनाफिलेटिक रिएक्शन तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आम डिस्कशन करबा ऑफ हम अरिथमेटिक्स एवं इंग्लिश को ठीक अच्छे तो आपण मान को आज क्लासटा केमती लगिला कमेंट मध्य निश्चय मतामत देवे जदि आम चैनल आपण मैंने नुआ ताहले प्लीज वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई पारे तो जो माने भी समस्त सब्सक्राइब कर दियंतु चैनल को एवं लाइक कर दियंतु। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू, जय जगन्नाथ।